नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी Q&A में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैकेनिकल मेटलर्जी का 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, pick out the wrong statement pertaining to metal deformation by twinning atoms in each successive plane within a block move different distance. Twinning appears as broad lines bands under microscope. Yeah, there is a markedly different lattice orientation in the twinned origin region या none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these. Pick out the wrong statement pertaining to metal deformation by twinning. Atoms in each successive plane within a block move different distance. Twinning appear as broad lines या brand under microscope या there is a markedly different lattice orientation in the twinning region या डी none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these. नेक्स्ट है दोस्तों, डिफॉर्मेशन इन पॉलीस्टेरीन Deformation in polycrystalline cubic metal takes place by slip twinning both A and B या neither A nor B. सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लिप. क्या बोल रहा है? डिफॉर्मेशन इन polycrystalline cubic metal takes place by slip. नेक्स्ट है दोस्तों, डिफॉर्मेशन इन polycrystalline hexagonal metals occur only when the applied stress causes slip twinning या both A and B या neither A nor B. सही आंसर है ऑप्शन बी, twinning. Deformation in polycrystalline hexagonal metal occur only when the applied stress causes twinning. नेक्स्ट है, टेंसाइल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डैश मटेरियल्स, डक्टाइल, हार्ड, ब्रिटल या नॉन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन ए, डक्टाइल मटेरियल्स. टेंसाइल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डैश मटेरियल. सही आंसर है ऑप्शन ए, डक्टाइल. नेक्स्ट है, compression test is mostly used for the dash material, ductile, brittle, hard या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, brittle. compression test is mostly used for the dash material. सही आंसर है ऑप्शन बी, brittle. नेक्स्ट है दोस्तों, stress strain curve of a metal connect be helpful in estimating the dash of material, yield point, yield strength and ultimate strength या percentage elongation या percentage reduction in area and Young's modulus of elasticity या ductility, stiffness या resilience या and toughness या none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these. Stress strain curve of a metal connect cannot be helpful in estimating the dash of the material. सही आंसर है ऑप्शन डी, none of these. नेक्स्ट है, the elongation of metals that occur at constant stress is called the yield point elongation, elastic deformation या plastic deformation या none of these. सही आंसर है ऑप्शन ए, yield point elongation. The elongation of metals that occur at constant stress is called the yield point elongation. Next है,
Work strain, hardening of metals or alloy, reduce ductility, formability and plasticity, या improves hardness and strength, या both A and B, या neither A nor B। सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B। Work strain, hardening of metals or alloy, reduce ductility and plasticity and is improve hardness and strength। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, the time dependent of strength on loading and unloading is called the set elastic after effect, या control theory, या Lauder band formation, या none of these। सही आंसर है ऑप्शन सी, Lauder's band formation। The time dependence of strain on loading and unloading is called the Lauder's band formation। Next, the mechanism that produce elastic after effect is called slip, twinning, internal friction, या none of these। सही आंसर है ऑप्शन सी, internal friction। The mechanism that produce elastic after effect is called internal friction। Next, Bossinger effect is same as elastic after effect as phenomenon is plastic flow, या irreversible, या none of these। सही आंसर है ऑप्शन बी, a phenomenon in plastic flow। Bossinger effect is a phenomenon in plastic flow। Next, session cracking result from combined effect of corrosion and internal stress is usually applied to stress corrosion cracking of cold work brushes, या may be eliminated by annealing strain hardened brush at 200 to 300 degrees centigrade for several hours, या डी all of above। सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above। Session cracking result from combined effect of corrosion and internal stress is usually applied to stress corrosion cracking of cold work brushes, या may be eliminated by annealing strain hardened brush at 200 to 300 degrees centigrade for several hours। सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above। नेक्स्ट है दोस्तों, preferred orientation is a condition of polycrystalline aggregates in which crystal orientation are not random, occur when certain crystallographic planes tend to orient themselves in a preferred manner, WRT, the direction of maximum strength, या dependent on the slip and twinning system available for deformation, या डी all of above। सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above। Preferred orientation is a condition of polycrystalline aggregates in which crystal orientation are not random, occur when certain crystallographic plane tends to orient themselves in a preferred manner, WRT, the direction of maximum strength, या depends on the slip and twinning system available for deformation। सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above। नेक्स्ट है, preferred orientation is produced by working of metal determined by X-ray method, not affected by roll speed, reduction passes, per passes, etc., या डी all of above। सही आंसर है ऑप्शन डी, all A, B and C। Preferred orientation is produced by working of metal deformation by X-ray methods, not affected by roll speed, production, reduction per passes, etc। सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above। नेक्स्ट है दोस्तों, cold working of metal reduce its ductility and plasticity, hardness, या yield strength and ultimate strength, या electrical resistance। सही आंसर है ऑप्शन ए,
ductility and plasticity. Cold working of metal reduce its ductility and plasticity. Next, while drawing metal wire through a die, the metal work hardness resistance to further deformation increases. Power required to continue drawing increases. A D all A B and C. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी. While drawing metal wires through a die, the metal work hardens. Resistance to further deformation increases. Power required to continue drawing increases. या डी ऑल ए बी एंड सी. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी. नेक्स्ट दोस्तों, एनलिंग ऑफ कोल्ड वर्क मेटल कोजेस रिकवरी, स्ट्रेस रिलीफ, रिक्रिस्टलाइजेशन या ग्रेन ग्रोथ या डी ऑल ऑफ अबव. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. एनलिंग ऑफ कोल्ड वर्क मेटल कोजेस रिकवरी और स्ट्रेस रिलीफ या रिक्रिस्टलाइजेशन या ग्रेन ग्रोथ. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग ऑफ कोल्ड वर्क मेटल्स lowers the strength acquired during its cold working, prevents its stress corrosion cracking, या does not release the internal stress in rolled, drawn and extruded object, या none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, prevents its stresses corrosion cracking. Stress relief annealing of cold work metals prevents its stress corrosion cracking. नेक्स्ट दोस्तों, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूस स्ट्रेन फ्री क्रिस्टल फ्रॉम द डिफॉर्म मेटल्स या रिजल्ट इन द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रेन या प्रोसीड्स एट ए हायर टेम्परेचर देन रिकवरी, या डी ऑल ऑफ अबव. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. Recrystallization produce strain-free crystal from the deformed metal, result in the formation and growth of new grain, या proceeds at a higher temperature than recovery. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी. नेक्स्ट है, recrystallization of which of the following metal can occur even at room temperature? आयरन, कॉपर, निकेल या जिंक. सही आंसर है ऑप्शन डी जिंक. रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स कैन ओकर इवन एट रूम टेम्परेचर. सही आंसर है ऑप्शन डी जिंक. नेक्स्ट है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्योरिटी ऑफ मेटल, एनलिंग टाइम, ग्रेन साइज ऑफ कोल्ड वर्क मेटल, या नॉन ऑफ देज. सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ देज. Recrystallization temperature does not depend upon the purity of metal, annealing time, grain size of cold work metal, या none of these. सही आंसर है none of these. Next है, with increase in percentage of soluble impurities in metal, its recrystallization temperature increase, decrease, remain same, या may increase or decrease depend on the type of metal. सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज. With increase in percentage of soluble impurities in metal, its recrystallization temperature is increased. Next है, in pure metal recrystallization occur at a temperature of about -Tm, where Tm is equal to melting point of metal degree Kelvin. सही आंसर है ऑप्शन बी 0.3 Tm. In pure metal recrystallization occur at a temperature of about 0.3 Tm. नेक्स्ट है दोस्तों, in alloy recrystallization occur at a temperature of about -Tm. सही आंसर है ऑप्शन बी 0.5 Tm. In alloy recrystallization occur at a temperature of about 0.5 Tm. Next है, the greater is the
degree of cold work on a metal, the higher is the recrystallization temperature, grain size, deformation necessary to causes recrystallization या डी none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी none of these. The greater is the degree of cold work on a metal, the higher is the recrystallization temperature, grain size, deformation necessary to cause recrystallization या none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी none of these. नेक्स्ट है with increase in the annealing time of cold work metal, its recrystallization temperature increase, decrease, remain same या may increase or decrease depend upon the type of metal. सही आंसर है ऑप्शन बी decrease. With increase in the annealing time of cold work metals, its recrystallization temperature decrease. Next है with decrease in the grain size of cold work metal, the recrystallization temperature increase, decrease, remain same या may increase or decrease depend on the type of metal. सही आंसर है ऑप्शन बी decrease. With decrease in the grain size of cold work metal, the recrystallization temperature decrease. Next है recrystallization of cold work metal increase its strength, hardness, ductility या none of these. सही आंसर है ऑप्शन सी ductility. The recrystallization of cold work metal increase its ductility. नेक्स्ट है दोस्तों recrystallization of cold work metal causes disappearance of distort and elongated grain, slip या further internal stress या डी all A B and C. सही आंसर है ऑप्शन डी all A B and C. Recrystallization of cold work metal causes disappearance of distorted and elongated grain and slip या further internal stress. सही आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट है दोस्तों grain growth, which is the third stage of annealing that followed recrystallization, means an increase in grain size, decrease with increasing temperature or time, is associated with gain in strength and hardness and a loss in ductility या none of these. सही आंसर है ऑप्शन ए means an increase in grain size. Grain growth, which is the third stage of annealing that follows recrystallization, means an increase in grain size. Next है दोस्तों the extent of grain growth depend on the annealing time, annealing temperature या rate of heating या D all of above. सही आंसर है ऑप्शन डी all of above. The extent of grain growth depend on the annealing time, annealing temperature या rate of heating. सही आंसर है ऑप्शन डी all of above. नेक्स्ट है with increase in temperature the grain size increase, decrease, remain same या may increase or decrease depend upon the metal. सही आंसर है ऑप्शन ए increase. With increase of temperature the grain size increase. Next है as the annealing time increase the grain size decrease, increase, remain same या may increase or decrease depend on the annealing temperature. सही आंसर है ऑप्शन बी increase. As the annealing time increase the grain size increase. Next है slower rate of heating during annealing of a cold work metal will form few nuclei, favor grain growth या result in coarse grain या D all A B and C. सही आंसर है ऑप्शन डी all A B and C. Slower rate of heating during annealing of a cold work metal will form new nuclei, few nuclei,
फेवर ग्रेन ग्रोथ, रिजल्ट इन कोर्स ग्रेन। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल prior टू रिक्रिस्टलाइजेशन फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू न्यूक्ली, मैनी न्यूक्ली या स्मॉल ग्रेन साइज या बोथ बी एंड सी। सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, मतलब मैनी न्यूक्ली एंड स्मॉल ग्रेन साइज। हाई डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स prior टू रिक्रिस्टलाइजेशन फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ मैनी न्यूक्ली एंड स्मॉल ग्रेन साइज। नेक्स्ट pick out the correct statement pertaining to recrystallization. The greater the amount of insoluble impurity, the finer is the final grain size. Yeah, allowing element like nickel etc. limits grain growth during annealing of steel, and in general the production of coarse grain by growth after recrystallization is not desirable as it's impairs the mechanical properties। या डी ऑल ए बी एंड सी। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू रिक्रिस्टलाइजेशन। The greater the amount of insoluble impurities, the finer is the final grain size. Allowing element like nickel etc. limits grain growth during annealing of steel, or in general the production of coarse grain by growth after recrystallization is not desirable as it impairs the mechanical properties। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स डज नॉट चेंजेस इट्स शेप, प्रॉपर्टीज, सरफेस कंडीशन या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल डज नॉट चेंजेस इट्स। सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब शेप, प्रॉपर्टीज, सरफेस कंडीशन इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए मेटल अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, फोर्जिंग या कास्टिंग। सही आंसर है ऑप्शन ए हॉट वर्किंग। Plastic deformation of a metal above the recrystallization temperature but below the melting or burning point is called hot working। Next plastic deformation of a metal below its recrystallization temperature is called hot working, cold working, forging या deep drawing। सही आंसर है ऑप्शन बी cold working। Plastic deformation of a metal below its recrystallization temperature is called cold working। नेक्स्ट है दोस्तों hot working of a metal result in strain hardening, does not cause its work hardening या can be carried out below recrystallization temperature या डी none of that। सही आंसर है ऑप्शन बी does not causes its work hardening। Hot working of a metal does not causes its work hardening। Next cold working of a metal is always carried out at room temperature for all the metals, results in strain hardening या is carried out above its recrystallization temperature या डी does not causes work hardening। सही आंसर है ऑप्शन बी results in strain hardening। cold working of a metal सही आंसर है ऑप्शन बी result in strain hardening। next in cold working of metal the grain structure is not distorted, amount of deformation without introducing other treatment is not limited, stress required to cause deformation increases rapidly with the amount of deformation या डी all of above। सही आंसर है ऑप्शन सी। In cold working of metals the
stress required to cause deformation increases rapidly with the amount of deformation. Next, hot working of metal is preferred for large deformation या uniformly disperses the non-metallic impurities throughout the metal या refined grain structure या D all of above. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज प्रेफर टू लार्ज डिफॉर्मेशन uniformly disperses the non-metallic impurities throughout the metal as a fine refined grain structure. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट दोस्तों, surface finish of cold work metal is not as good as cold work metal mainly because of higher internal stress, lower internal stress या oxidation and scaling या और hardening. सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एंड स्केलिंग. Surface finish of hot work metals is not as good as cold work metal mainly because of oxidation and scaling. Next, self-annealing action of metals during hot working prevents hardening, loss of ductility या both A and B या neither A nor B. सही आंसर है ऑप्शन सी both A and B. Self-annealing condition, self-annealing action of metal during hot working prevents hardening and loss of ductility. Next, which of the following defects in metal does not get welded up during its hot working? Blowhole, internal porosity या cracks या none of these. सही आंसर है ऑप्शन डी none of these. Which of the following defects in metal does not get welded up during its hot working? सही आंसर है ऑप्शन डी none of these. Next, cold working of metal produce strain hardening because it takes place below recrystallization temperature, it takes place above recrystallization temperature, of low extent of deformation या of uniform distribution of insoluble impurities in the metal. सही आंसर है ऑप्शन ए it take place below recrystallization temperature. Cold working of metal produce strain hardening because it take place below recrystallization temperature. Next, cold working compared to hot working of metals obtain thinner material, better surface finish and mechanical properties या greater dimensional एक्यूरेसी या डी ऑल ऑफ अबव. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. कोल्ड वर्किंग कंपेयर टू हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स ऑब्टेन थिनर मटेरियल, बेटर सरफेस फिनिश एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या ग्रेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी. सही आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट, कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल डज नॉट इम्प्रूव द आइजोड वैल्यू, रेसिडुअल स्ट्रेस, yield strength या हार्डनेस. सही आंसर है ऑप्शन ए आइजोड वैल्यू. कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल डज नॉट इम्प्रूव द आइजोड वैल्यू. नेक्स्ट है द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इंक्रीज इट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, परसेंटेज इलोंगेशन या रिडक्शन ऑफ एरिया. सही आंसर है ऑप्शन ए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. Cold working of metals increase its ultimate tensile strength. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और दोस्तों आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और आपको अगर लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.